अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके पास एक नया स्लाइड शो लेके हाजिर हुए हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड अमलगमेशन के सिलसिले में। दिस इज़ MCQs है, इसमें कवर किए गए हैं फॉर ओ लेवल अकाउंट्स, टॉपिक 11 है इसका। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे ख्याल में ग्रेड 11 और BCom पार्ट 1 और 2 के स्टूडेंट्स भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, वो स्टूडेंट्स भी ग्रेड 11 और BCom पार्ट 1 के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठाएं। और आपसे मज़ीद एक गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इसको रिकमेंड करें। तो पहली स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, X and Y were sole traders. They decided to amalgamate their business and to share profits and losses in ratio of 2:1. They brought into the partnership assets of $30,000 X के और $29,000 Y के लिए. Y's assets included goodwill of $9,000. Goodwill was not to be retained in the accounts of partnership. पार्टनरशिप अकाउंट में जो नया अकाउंट एक बनेगा उसमें गुडविल वो रिटेन पार्टनर रिटेन नहीं करना चाहते, और जो गुडविल जो लेके आया है भाई वो आपस में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 के रेशियो। व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर X and Y? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C and D. Correct answer is given as B, and let's see how it is calculated. Capital X is जो brought in किया उसने $30,000 and capital Y without the goodwill is $20,000. Goodwill not to be retained, वो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अब X और Y के हिसाब से ओल्ड रेशियो में तो Y का $9,000 दैट इज गिवन। न्यू रेशियो के हिसाब से आप देखिए कि 2:1 मीन्स 3 पोर्शन यानी गुडविल के 3 पोर्शन करने होंगे, और 9,000 को अगर हम डिवाइड करें 3,000 से तो $3,000 फॉर ईच पार्टनर आएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे रेशियो जो डिवीजन का है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है तो 2:1 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे $3,000 को, तो X का जो शेयर जाएगा वो $6,000 जाएगा और Y को जो शेयर जाएगा वो $3,000 जाएगा। अब ये $6,000 जो है इसको हमने डिवाइड करना है। दिस इज टू बी डेबिटेड टू दी अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ X एंड क्रेडिटेड टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ Y। आप ये देखिए कि नीचे ये X और Y के कैपिटल बैलेंसेस को डिवाइड किया गया है। 30,000 माइनस 6,000 तो उसका कैपिटल हो जाएगा $24,000, और Y का जो है 20,000 उसका डॉलर था उसका, और उसमें ऐड किया गया $6,000, तो दैट मीन्स कि उसका जो कैपिटल हो नया कैपिटल जो होगा वो $26,000। तो दिस इज दी सोल्यूशन, और B पावर 26,000 and 24,000। Okay, now we go to the next slide. Which group of items appear in the partnership appropriation account? Partners appropriation account means this is an account where the profits are divided among the partners. Profits are divided among the partners. This is a kind of a account. Again, 4 options are given: drawing, interest on capital, partner salary. B option is interest on capital, interest on drawing, partner salary, etc. C and D are given. Correct answer is given as B. और नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, drawings and partners loan interest are not items of appropriation account। यानी appropriation account में drawings और partners का लोन इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं कर सकते, इसलिए appropriation account में ये नहीं आएगा। और ड्राइंग्स एंड partners loan interest are recorded in
partner's current account. अब B जो है that goes into the correct account. इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है और पार्टनर्स सर्विस दिया हुआ है. सिर्फ इसके जो ड्राइंग और पार्टनर्स लोन जिस ऑप्शन में दिया गया है that cannot qualify to be the correct answer. तो काइंडली आप इसको विचार कर लें और correct answer is B. Now we go to the next slide. Ron and David are sole traders. They agree to amalgamate their businesses and to share profits and losses equally. Their profits and losses are shared equally. Ron's goodwill was valued at $3,000 and David's goodwill at $6,000. How will goodwill be recorded in the books of the new business? The journal entries क्या होंगे in other sense? On 4 options are given over here. Correct answer is B. I would narrate over here. Goodwill is intangible asset, and if it is an asset, it has to be debited. And if you add up 8,000 and 6,000 goodwill of both the partners, that comes to $14,000. And goodwill, as it is an asset, therefore it shall be debited, and respective amounts shall be credited to the capital account of the company. Fran's capital account will be credited by $8,000